here at the dais by respected Director General IIIDM Rakesh Verma sir, Director General Media ICI Ashish Goyal sir, and Director Training Shubhra Saxena madam. Uh, so the the proceedings of the today's curtain raiser conference is we'll first have a introductory remarks from Director General Sir, IIIDM, and then we'll have a logo launch and a curtain raiser of the event, of the conference, which is to happen later this month. Without anything further, I'll hand it over to Director DG Sir for his inaugural comments. Good morning to all. I welcome you this morning for the curtain raiser press conference of the India International Conference on Democracy and Election Management, which will be held in the third week of January this month. And I'll not be giving more details about that. With us, we have DG IIIDM, Shri Rakesh Verma ji, who will be briefing you about the entire conference. And Shubhra Saxena ji from the Election Commission of India is with us. She is handling the International Cooperation Division also for Election Commission of India. So I would request DG sir to please start with this presentation. Thank you, Ashish, and I extend a very warm welcome to all our media friends. We have this briefing on India International Conference on Democracy and Election Management. Next slide, please. So, since many of you would be visiting us for the first time, just a brief introduction to IIIDM. It's an institute set up by Election Commission of India, and our main mandate is the national programs where we train our workforce, all election officials from chief electoral officer to returning officer to laying guidelines for everyone. We also do global programs, so we train and capacity building programs for election management bodies across the world. We also do research and knowledge development in the field of democracy and election management, and then promotion and advocacy of the good practices, the best practices in election management. So these are broadly our core functions of IIIDM, and we support Election Commission of India in this training and capacity building. Next, please. Coming to the conference, this is the conference broad structure. We are organizing this conference under the overall aegis of Election Commission of India in partnership with International IDEA, as you all might be aware. International IDEA is an intergovernmental organization which has 35 members, 2 observer states, and India is the chair of International IDEA for 2026. This conference is for 3 days, from January 21st to 23rd, and it's being organized at Bharat Mandapam, New Delhi. Next, please. So this conference will act as a platform for, number one, is the international cooperation amongst election management bodies. Much like any other domain, any other area, election management bodies also need to learn from each other, share their best practices. So that is the primary objective, to provide a platform for international cooperation amongst the election management bodies. The second is, most of the election bodies face similar challenges, so how do we develop a common and shared vision for the challenges that are being faced and evolve solutions. Third is sharing best practices and innovation. Each election management body is also working towards addressing those challenges and co-creating solutions, because if we pool together our experiences and our expertise, we find better solutions. So these are the primary, the 4 objectives what the conference is, prepared for. Next. Then our chairship theme for International IDEA is Democracy for Inclusive, Peaceful, Resilient and Sustainable World. And this conference also adopts the same theme. And as part of the theme, we have 2 broad thematic pillars. One is reimagining democracy for the future. The second pillar is independent and professional election management bodies
for sustainable democracy. So under these two thematic pillars, we will organize various sessions, discussions, and deliberations in the conference. Next, please. Overall conference is broadly into two parts. One is the general plenary sessions, and the second are the thematic sessions. So in the general plenary sessions, there will be an inaugural session. There will be EMB leaders plenary, all the heads of EMBs who are coming. We will have one leaders plenary with our Election Commission of India. EMB working group meeting where we will have more detailed, deliberations on methodology of our work, how do we work together. Launch of ECI Net, that's been one integrated technology platform which can be useful to various other election management bodies also. So we are planning to showcase that to the audience. On the thematic side, we have 7 sessions on cross-cutting global themes, like artificial intelligence and election, training and capacity building. Then we have 11 sessions on model international electoral standards. We are trying to develop, based on our experiences, model standards for election management bodies. And then best practices and innovations. There will be 25 sessions around discussions and deliberations on best practices and innovations. Next. Speakers and participants, so we have election management bodies, the heads and the senior officials will be participating. Representatives of International IDEA will be participating, and we are inviting some other international organizations also. The experienced electoral practitioners, all our chief electoral officers, their additional chief electoral officers and people from ECI headquarters, those who have been conducting elections and have tremendous election experience. We are also trying to invite and involve our institutions of national importance. So we've invited IITs, IIMs, NLMUs, IIMCs, and other reputed universities. So these are broadly, the speakers will be drawn from this, and they will also be part of the audience for the conference. Next, please. So far, we have around, as we speak, there are 44 election management bodies which have confirmed their participation. There could be close to 100 international delegates. We are also inviting the foreign missions based in India. Some of the countries who have not been able to send their election management bodies, they will be represented by the foreign missions here. Like I said, some of the IITs, IIMs, and NLUs have also, this is the number as we speak. We still have 2 weeks, so I'm sure there will be much bigger participation. All our chief electoral officers are very closely involved because they bring extensive experience in conducting the election. So there are 36 thematic groups which will be led by chief electoral officers, and they will be the core activity of this conference. We've also identified national and international academic experts who have expertise in election management, and we would involve them in the conference. Next. Just to get little more into the sessions, so these are the kind of sessions you see on model international electoral standards. And we have one of the chief electoral officer who's been assigned the theme, so he'll be kind of coordinating this session. He will be putting together the session. So these are 11 sessions on different model international electoral standards, which will be discussed during the conference. Next. Then the best practices and innovations, again, there are 25 sessions, and we have allotted each session to one chief electoral officer so that he kind of moderates the session and conducts the session. There will be other speakers, there will be other experts who will be sharing their thoughts, experiences, and insights. So these are again around different electoral processes. We have these different sessions. Next. So in all, about 25 sessions that we have around best practices and innovation in the electoral processes. Next. So that is the brief about our conference. Today we are also launching our logo for the conference, and it will be unveiled just now. We can probably now move to the logo. Launch, yes. We'll be launching the logo first, and after that, DG IDM will give you a brief about the logo, what it stands for, and that will be followed by a question and answer session.
So that is the sequence of things. So, please. So this logo has been designed as the official visual identity of the India International Conference on Democracy and Election Management, reflecting the core values of democracy, participation, institutional integrity, and international cooperation. The logo features stylized human forms resembling protective hands, symbolizing citizens as the foundation of democracy and the collective responsibility to safeguard democratic values. At the center of composition is the globe, representing the global nature of the conference and shared learning amongst the nations. India is prominently positioned at the center, highlighting its role as the host nation, the world's largest democracy, and a key contributor to global best practices in election management. The open form of the globe at the top signifies openness and welcoming outlook, reflecting the continuous evolution of democracy through dialogue, innovation, and shared learning. So that's the brief about our logo. Thank you very much. I think बीच में इन्होंने रन कर दिया था। वो एनिमेशन एक बार और रन कर दो। I'll be sharing this brief. We'll be sharing with you. I'll send a WhatsApp. आवाज नहीं आ रही थी आपकी। उसी लुक पे है, ठीक। Now we can have the Q&A, but the Q&A will be restricted to the conference only, so kindly cooperate. सर मैं शैलेश हूँ एएनआई से इधर राइट।
सर आपकी प्रेजेंटेशन में 42 EMBs और 90 से अराउंड 100 पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, तो कितने हेड्स आएंगे EMBs के? जैसे 42 है तो सारे हेड्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं या As of now, out of 44 EMBs, around 35 heads are coming. So 35 countries election management body, their heads, chairpersons are coming. The others are headed by senior officers of the secretariat. In all, about 100 delegates. मेरा सवाल है सर कि ये कॉन्फ्रेंस आपकी ऐसे वक्त में हो रही है जब देश में एसआईआर चल रहा है, बहुत सारे बयान आ रहे हैं, ममता बनर्जी ने कहा है एसआईआर रोकने के लिए, तो आप लोग प्रिपेयर हैं कि इस तरह के सवाल भी उठ सकते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी और इलेक्शन मैनेजमेंट पर यह कॉन्फ्रेंस है, और दूसरा इलेक्शन चोरी के, वोट चोरी के आरोप देश के सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, तो ऐसे सवालों को लेकर आपका क्या जवाब है? क्योंकि हो सकता है उस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी उठे। थैंक यू। ट्रिपल आईडीएम जैसे मैंने बताया, हम लोगों का काम है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करना। वी आर नॉट इनटू ऑपरेशनल, रेगुलेटरी और डे टू डे कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। So triple IDM looks at long-term study, long-term research and knowledge development. So the conference is around that, so model standards, best practices in terms of a long-term development of knowledge. So, it's not work. हाँ, सो मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। जनरली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी वो हमेशा एक दिन की होती थी। इस बार इसको 3 दिन करने के पीछे क्या लक्ष्य है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब इस बॉडी को बने हुए लंबा समय हो गया, क्या कारण है कि ये अगर दुनिया के सामने एक स्थापित बॉडी है तो शोध और पढ़ाई के लिए क्या आने वाले भविष्य में कुछ उपलब्ध कराएगी जिससे लोगों को पता चल सके? So, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस ऑडिटोरियम में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये मार्च 2025 में तैयार हुआ है बन के। सो ट्रिपल आईडीएम की स्थापना ही इसी उद्देश्य के लिए हुई थी कि हम लोग जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसको वर्ल्ड तक कैसे पहुंचाएं, अपनी वर्कफोर्स को भी स्ट्रेंथन करें और वर्ल्ड में कैसे पहुंचाएं। आज की डेट में ट्रिपल आईडीएम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी ऑपरेशनल वो है, वो एक स्टेबलाइज हो गया है, पूरी तरह से डेवलप हो गया है। और अब हम उस पोजीशन पे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स को पूरी तरह सपोर्ट कर पाएँ। और इसीलिए जो कॉन्फ्रेंस पहले 1 दिन की होती थी, आज वो 3 दिन की है, क्योंकि अब हमारा एजेंडा और एक्सपैंड हो गया है। अब हमारे एम्बिशंस, ये जो अभी इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, इट्स मोर एम्बिशियस only because now we have developed this capacity through this institution to really contribute to this global advocacy, global capacity building and global training. जो दूसरा क्वेश्चन आपका था कि कैसे हम इसको और सर्टिफिकेट कोर्सेज या और स्टेक होल्डर्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, सो वो प्रोग्राम्स भी हम लोगों के जो हमारा ऑब्जेक्टिव है नेशनल प्रोग्राम्स में, उसमें सर्टिफिकेट और मास्टर कोर्स भी है, जहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका इलेक्शन के साथ एक्सपीरियंस है, जो इलेक्शन में जुड़े हुए हैं स्टेक होल्डर्स, उन सब के लिए ये प्रोग्राम्स धीरे धीरे करके अवेलेबल कराए जाएंगे। हाँ, so like I said, 45 election management bodies have confirmed, but overall our participation will include many foreign missions. So we expect around 40 other foreign missions to join. So in all, about 85 countries will participate in the international conference. And through different programs, like we said, plenary sessions, we said thematic session, these election management bodies will also have bilateral meetings, exchanging and exploring possibility. So, Vrinda from Hindustan Times, I wanted to ask that will there be any discussion, and because SIR has required a lot of capacity building and triple IDM has, been involved in like training of BLOs and everyone. So will you also be sharing best practices related to SIR and purity of electoral rolls? I think there is also one session on it. And secondly, can you give some examples of the states that will be participating? Other states?
like countries that will be participating? I didn't get the question. What do you want from the countries? Sir, representatives of which countries, a few examples if you could share, which all countries would be participating? So I think we have all the, around 14 member states of IDEA countries, and then, so today, let's say the USA has also confirmed their participation. Before that, we had Mauritius, Brazil, South Africa. So many of the important election management bodies are participating in this. I think Bhutan is confirmed their participation. Nepal, it's still probably under consideration. So since still there is a time for the conference, so far we have received around, like I said, 44 confirmation. The others are in the pipeline and we are working with them. And sir, SIR question as well, if you could. So as I said, when we organize these conferences, the idea is to look at all best practices across the globe. So there will be election management bodies who will be making presentation. There will be some experts who will be making presentation. And obviously some of the chief electoral officer will also share their experiences. And that will contribute to overall formulation of standards, best practices. But it doesn't happen in one step. It's an evolution process. So this is just the beginning. The first conference will have some exchange of practices and knowledge. And as we go along, we will see how that shapes into our final output. सर मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि किस तरह के अनुभव साझा किए जाएंगे अन्य देशों के जो डेलीगेट्स हैं और जो उनके प्रतिनिधिमंडल आएंगे उनके साथ में, क्या SIR का भी जो अनुभव है चुनाव आयोग का वो साझा किया जाएगा ताकि पूरी दुनिया में SIR कराया जा सके? जैसे अभी मैंने बताया कि हर सेशन में हमारे अपने प्रैक्टिशनर्स भी हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, उनके एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं। हर सेशन की एक थीम है, उससे रिलेटेड जो भी उनके फील्ड के एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने साझे करेंगे। तो उसमें अगर कोई SIR का काम कर रहा है, कोई फोटो आइडेंटिटी का काम कर रहा है, कोई स्वीप से या कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड कर रहा है, तो सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सर मैं मनीष अग्रवाल नौभा टाइम से, इस तरफ मैं मनीष अग्रवाल नौभा टाइम से। जैसे सर देश में SIR हो रहा है 22 साल बाद, 22-23 साल बाद, तो इसमें यह भी होगा कि अब इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं सामने कि इतने डेड हो गए या शिफ्ट हो गए, तो रेगुलर हर साल ऐसा चलता ही रहे और ये प्रॉब्लम ना आए जो अब सामने आ रही हैं जैसे कि। नहीं, मैं तो कॉन्फ्रेंस के बारे में बता सकता हूं कि जो ये हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी। ये हम लोगों की प्लानिंग है कि हर साल जनवरी में 21 से 23 को हम लोग ये इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को इंडिया में बुलाएं और इस डिस्कशन को लीड करें, जितने भी इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं, इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस हैं। तो कॉन्फ्रेंस तो जरूर एनुअल होगी। उसमें किस तरह का डिस्कशन, डेलिब्रेशन, इश्यूज टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, हर एक पार्टिसिपेंट्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये कॉन्फ्रेंस एनुअल होगी और नेचर ऑफ एजेंडा विल कीप इवॉल्विंग। सर मैं आकाश श्रीवास्तव हूँ। सर सीधा सर मेरा सवाल EVM को लेकर है कि क्या इस कॉन्फ्रेंस में EVM को लेकर जो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई थिंक दिस फोरम आप कॉन्फ्रेंस पे ही क्वेश्चन पूछिएगा। नहीं सर, कॉन्फ्रेंस से ही रिलेटेड है। तो अगर उसकी ट्रेनिंग की कोई बात है या उसकी जानकारी, हाँ उसी को लेकर है सर। सर कॉन्फ्रेंस में जैसे कि भारत में EVM को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, अगर कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कोई सवाल होता है या निर्वाचन आयोग की तरफ से EVM को लेकर किसी तरह का कोई चिंतन मंथन की बात होती है, तो क्या कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया जाएगा? नहीं, हम लोग जो इलेक्शन टेक्नोलॉजी जैसे एक ब्रॉड टॉपिक है, जैसे उसमें बैलेटिंग भी आ जाती है, उसमें बाकी एस्पेक्ट भी इलेक्टोरल प्रोसेस के आ जाते हैं, तो इस पे डिस्कशन होता है। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इंडिया का अपना एक्सपीरियंस है वो शोकेस होगा, बाकी कंट्रीज का अपना एक्सपीरियंस शोकेस होगा, उसमें से जो भी लर्निंग होंगी वो अपना निकल के आएंगी। सर वर्मा जी, मेरा नाम मनोहर सिंह है। सर यू हैड टॉक्ड अबाउट द मेन थीम ऑफ द दिस conference, democracy for inclusive, peaceful, resilient and sustainable world. The discussions will go into, there will be two pillars. And one pillar is
reimagining democracy for future. So can you throw some light about this thing part? Every country has a democratic experience. Democracy has also been evolving. Western world has its own view. The global South has its own view. Artificial intelligence is also coming. All these factors and the learnings of democratic institutions over a period of time should guide us for the future of democracy. So that is the aspect that, we need to continuously learn from our experiences, and in whatever way the current challenges can be foreseen and we can work towards a better form of democracy, better delivery of democratic institution and processes. That is the theme, that is the first pillar. The second pillar is obviously the election management bodies play a very crucial role in democracy and electoral democracies. So a professional election management body is very important. So all aspects of professionalism in the election management bodies, that is the second pillar, and on which we discuss about best practices in electoral processes. We are also looking at developing global standards for electoral processes, which can guide any election management body which is trying to improve. सर मेरा नाम ऋषि है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें राजनीतिक दलों का कोई स्टेक होगा, उनसे बातचीत होगी, उनका पार्टिसिपेशन होगा, उनके एक्सपीरियंस शेयर होंगे? इस कॉन्फ्रेंस में अभी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज पे ही फोकस है, एंड लाइक आई सेड, सम ऑफ द फॉरेन मिशंस, इंडियन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये इन्वॉल्व हैं। उसके आगे अभी हम लोगों ने आगे कोई इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जो आपने अभी डिस्कशन का जो थीम का बात किया था, तो जो फर्स्ट पिलर है डेमोक्रेसी इन द फ्यूचर, उस पे जो है मेन जो पार्टिसिपेंट्स होंगे या स्पीकर्स होंगे, वो लोग कौन कौन होंगे, बता सकते हैं कुछ? इसमें जैसे 4 टॉपिक मैंने आपको बताया, जैसे AI एंड इलेक्शन है, या डेमोक्रेसी कैसे लोगों को एम्पावर कर रही है, या तो डेमोक्रेसी से कैसे एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो रही है, हाउ इज डेमोक्रेसी लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो चीज़ें हैं ये लार्जली इसका डिस्कशन पॉइंट है। इसमें हमारे कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ हमारे एकेडमिक एक्सपर्ट्स होंगे, और कुछ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ भी अपना, मतलब सारे लोग इसमें, हर एक सेशन में 4-5 ऐसे लोग होंगे जो स्पीकर्स होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये इनिशियल एजेंडा हम लोगों ने बेस्ड ऑन आर जो करंट इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे हैं वो फ्रेम किया है। उसके बाद हर एक थीम के अराउंड एक थीमेटिक ग्रुप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अंडर हिज लीडरशिप हैज बीन सेट अप। अब कोई भी थीम है उसमें इस समय क्या ग्लोबल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, क्या EMBs के चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशंस उन्होंने निकाले हैं, वो पूरा थीमेटिक ग्रुप इसी चीज़ पे डेलिब्रेट करेगा। और कॉन्फ्रेंस में तो एक सेशन इज अ बिगनिंग, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ देयर थॉट प्रोसेस और एंगेजमेंट और देयर आउटपुट। In fact, the work will start from the conference and then they will also keep working subsequently, as a thematic group. तो जो आप issues बता रहे हैं कि regulation आजकल जैसे online media, social media, और इसमें हर election management body challenges face कर रही है और हर एक ने solutions भी निकाले होंगे। उनमें से क्या है जो आपस में सीख के हम लोग कोई consensus और बन सकता है, कोई और common policy बन सकती है, global level पे कोई solutions बन सकते हैं। So इसका कंक्लूजन इस कॉन्फ्रेंस में नहीं होने वाला है, ये तो कॉन्फ्रेंस विल इनिशिएट दैट डिस्कशन
identify what are the challenges, what are the areas, what are the solutions which people have. Like I said, हर एक सेशन में इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ और एक्सपर्ट्स होंगे, प्रैक्टिशनर्स होंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. उससे एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनेगी. उस अंडरस्टैंडिंग की भाई ये चैलेंजेस हैं, ये सॉल्यूशंस अब तक इवॉल्व हो चुके हैं, जो अभी तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल है सोल्यूशन. वहीं से वो थॉट प्रोसेस ट्रिगर होगा जो आगे फॉलो अप करते हुए हम लोग हर एक थीम पे फाइनल एक रिपोर्ट भी बनाएंगे. उस रिपोर्ट में होपफुली जो भी चैलेंजेस हैं उनका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, क्या रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, वो उस रिपोर्ट में हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो आएगा. As of now, like I said, we have picked up our own institutes of national importance, IITs, IIMs, NLUs और IIMCs, क्योंकि हर जगह पे टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, ये सब की बैकग्राउंड तो चाहिए होती है. अब जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, उनका भी अपना एक्सपीरियंस है, वो भी अपने होस्ट कंट्री में इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते होंगे. तो किसी ना किसी स्टेज पे हम लोग बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं उनको एंगेज करेंगे इस थीमेटिक वर्क में. उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी जो समझ है, उनके साथ जो हम लोग लर्निंग कर सकते हैं, ये करेंगे. Sir, Joymala from UNI. Sir, as there are all the CEOs of the states will be coming and giving their best knowledge and sharing in the conference, I want to ask that on basis on which ground the CEOs have been selected. Suppose here it's written in Ladakh, the eligibility of the electors. In Uttar Pradesh, maintaining law and order. So in West Bengal, this is postal so system. there is no, because each CEO... No, I want to say that, is it like reflecting the state scenario? Not at all. You know, most of these themes represent the universe of election life cycle. And each CEO is involved in all topics. It's not as if Ladakh is involved only in electors and someone else is not involved. So we just wanted to engage all the chief electoral officers because of the experience they have, because of the implementation experience they have. So there is no great analysis or method into division of the topics. And we rather understand over a period of time, all of them will contribute to other themes also. It's not as if they will be only strictly limited to that theme. Similarly, there are our officers at the headquarters, deputy election commissioners, they will also be contributing. So it's just a method of channelizing all chief electoral officers that we've allotted one theme to it, not necessarily anything else. I think we followed, one is our international IDEA chairship, that was the back 37 countries. Then we have countries with whom we have signed memorandum of understanding, around 38 countries with whom we have MOUs already signed, election management bodies. Then we have election management bodies who have been coming to us for training and capacity building. So these are the broad three categories of our election management bodies, which constitute about 85 of them. I think rest of the questions we can follow over lunch also. Right? 1 minute. Okay, one last. Hello. Yeah, please go ahead. One election? One election, one card. That's not the decision. Sure. Rakesh ji, here is Sandeep Shornokar from Bartaman newspaper. It's a newspaper of West Bengal. आपने बोला कि पिछले कई सालों से आपने challenges बहुत face किया है. So I wanted to know, last 10 years in elections, how many challenges you have faced and how you solved? I think that will be a subject of a research paper and a doctorate maybe.
You know, every day is a challenge in the election, and you know it, and the institution has been rising to the occasion, and I think it will require a very detailed session to go over all the challenges that have been faced. And अब तक AI तो इस्तेमाल नहीं हुआ ना इलेक्शंस में इंडिया. Thank you. Thank you. Please join us. I mean, there is a campus tour, and then join us for lunch.